Manoj, I beg to appear on behalf of the. Manoj, can my lord see me? Yes, Manoj. Manoj, I beg to appear on behalf of the complainant. Manoj. If I could just reiterate, Manoj, this is that appointment issue, Manoj, where the order of the Honorable Division Bench was of April 2024, Manoj. Twice the Honorable Supreme Court said, please implement it. Finally, SLP dismissed on 28th August 2024. 7 months back, SLP dismissed, Manoj. Thereafter, 10 warnings have been given by my lords to the state to issue us appointment letters. 10 warnings, starting from September of 2024. Today is the 11th hearing, Manoj. Either an adjournment has been sought or final chance has been given multiple times, Manoj. Last time, Manoj, the matter was listed on 17th February before my lords, where my lords had asked 2 questions to them that kindly complete the implementation by 15th March. And there are about 900 posts as per 17th February order, my lords, which they had to come back with. Now, today they have filed a reply, my lords, saying that we will issue appointments by the end of March. And they say that the 900 posts have expired. The question that I put to myself is, my lords, how can such a reply at all, my lords, explain the conduct of the state? When there is a specific direction by a division bench in April 24 that these 900 posts are to be included, it is a common vacancy, my lord. It is not a separate vacancy. There is only one notification having a common vacancy. So therefore, these 900 posts which were left vacant. As per order of Honorable Division Bench, there is no order with regard to 900 posts lying vacant. There is no order. There is no order. They say the list has to be made. You have made an argument that there are more than 900 posts lying vacant. Indeed, my lords. But the said list has not been placed by the respondent before this court. Indeed, my lords. Therefore, this court has directed the learned counsel for the respondent to verify the above facts. Yes, my lords. And explain the same by the next date of hearing. Yes. What they have done is 2 things. And he has explained that. Yes, my lords. Can I just answer? There is no 900 posts. No, that is not. They were vacant before the order passed. Before the order passed means in 2024. तो पोस्ट भर कैसे गई? भरी नहीं है, वो खाली थी. उसके बाद फिर वो जो पोस्ट जो वैकेंट थी वो दे हैज बीन एक्सपायर्ड ऑन 1/7/2024 को वो एक्सपायर हो गई है उसकी वैलिडिटी एडवर्टीजमेंट की. इनमें अपॉइंटमेंट कभी हुई ही नहीं थी. 900 पोस्ट में कभी अपॉइंटमेंट हुई ही नहीं है. वो शुरू से खाली थी. that part has not been also been contested in WPS. वही. तो मतलब if I can just say this, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. 1 मिनट दीजिए प्लीज. जब ऑनरेबल डिवीजन बेंच का ऑर्डर है 2 अप्रैल का, वो पूरी एडवर्टीजमेंट के साथ डील कर रहे हैं मलोज. पूरी एडवर्टीजमेंट में 900 पोस्ट इंक्लूडेड है. तो जो ऑर्डर देखेंगे मलोज डिवीजन बेंच का, उसमें लिखा है कि पूरी you have right to file rejoinder. Maloz, I have a right to file rejoinder. Maloz, then can I just make one request, Maloz? I'll file the rejoinder. Or for those 900 posts, I will file. I agree to that, Maloz. But for the remaining, which they are accepting that they have to issue appointment letters, thrice they have told before this court that by 15th March we will complete it. My only Lordship, that Maloz, after 17th February से लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ. 2025. Lordship. Lordship, in this the merit list has been and issued. This court has a specific direction to comply the order passed by this court by 15th March 2025. And in this regard, what is the progress in counseling / selection / appointment be filed along with the documents and affidavit. Lordship. Affidavit file किया आप? Lordship. Documents file किया, क्या progress से बताएं? Lordship. May kindly see Lordship annexure P4, page number 9, Lordship. That was the timeline. Page number 9, Lordship, of the reply. चलो पेज नंबर 9 की डेट भी देखिएगा प्लीज. 24 जनवरी की है लेटर. आपने 17 फरवरी को उनको बोला कि अब जो प्रोग्रेस होगा ये 1 महीने पहले डॉक्यूमेंट लाके दिखा रहे कि हमने 2 महीने पहले ये काम किया था. मतलब वेरी सॉरी टू से मलोज, बट ऑर्डर्स को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है. एक 17 फरवरी को अगर ऑर्डर पास होता है कि आप प्रोग्रेस बताइए, प्रोग्रेस में बता रहे कि हमने 1 महीने पहले डिसीजन लिया था. मतलब जैसा मैं ठीक समझ. कौन सा है आपका? Annexure R4. This was the timeline that was issued on 24/1/2025.
इस टाइमलाइन के इशू होने के बाद देयर 15 वाज मार्च 2025 तक करना था। अ लॉर्डशिप। ठीक, फिर After that, the Honorable Court in WPS number 925 of 2025, they have extended the date of the counseling. The prior date of 5/2/2025 को जो मेरिट लिस्ट इशू होनी थी उसकी डेट बढ़ा के 10 तारीख कर दी। 10 तारीख अगर कर दी तो उसके बाद जो मेरिट लिस्ट इशू हुई वो 12 तारीख को इशूड हो गई। Thereafter, similar writ petitions of that nature, expecting the same relief, have been filed with the Honorable Court, and Honorable Court has allowed that, disposed of the writ petition, expecting from the respondent authorities to act upon it in accordance with law. The same I have written in my reply. That's why the delay which is being occurring, that is not any latency on the part of the department or any. Manoj, all this was recorded on the 17th February's order. अगर आप ही का order देखेंगे last date का, जितना भी अभी argument हो रहा है, ये सब चीज my lords के सामने था। Lordship, there were regular petitions. थोड़ा सा मैं अगर push कर सकूं मनोज, ओके एक दिन भी डिवीजन बेंच के ऑर्डर पे स्टे नहीं रहा, नॉट इवन अ सिंगल डे। एंड उसके बाद आप सितंबर से पुश कर रहे हैं प्लीज कि इसको इम्प्लीमेंट करिए। अब मैं रिक्वेस्ट बड़ी रीजनेबल करना चाह रहा हूँ मनोज, अगर आप उसको प्लीज कंसिडर करेंगे। द रिक्वेस्ट इज ओनली दिस, स्टेट ने खुद कहा है कि हम 15 मार्च तक खत्म कर देंगे। मेरी रिक्वेस्ट आज इतनी है मनोज कि 15 मार्च तक ये मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दे दें। अगर 15 मार्च तक ये नहीं देते तो 17 मार्च को मनोज इनको प्लीज फिजिकली अपेयर होने के लिए और चार्जेस फ्रेम करने के लिए बुला। इनकी खुद की डेडलाइन शुरू से रही है, 15 मार्च तक हम कंप्लीट कर देंगे। इतना सा मेरा रिक्वेस्ट है कि 900 को चलिए मैं रिजॉइंडर में डाल दूंगा। Thereafter जो टर्मिनेशन हुआ था 2600 कुछ पीपल का टर्मिनेशन हुआ था जो बीएड कैंडिडेट से, अब उनके हिसाब से जिनको अपॉइंटमेंट मिलनी है इनको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उस पर कभी स्टेट ने डिलाई नहीं किया है। देयर आफ्टर 24/2/2025 का एनेक्जर R8 देखेंगे मैं लोग, उसमें जो रोस्टर है। मुझे बताएं डेडलाइन अभी आप जो बता रहे हैं, वो जो बीच में भी एक रिट पिटीशन फाइल हो गई ना लॉर्डशिप, उसके कारण आपको डेडलाइन बढ़ गई जैसे बता, लॉर्डशिप आप कब कंप्लाई करेंगे? लॉर्डशिप द टेंटेटिव डेट, बिकॉज लॉर्डशिप मेरा कॉमन बस प्रॉब्लम ये है लॉर्डशिप, करेंगे ये बताएं, पूछ रहा हूं मैं आपसे। 28 मार्च लॉर्डशिप, 28 मार्च लॉर्डशिप। उनके मैं ऑर्डर लिखवा एक बार आप ऑर्डर देख लें parties at length and peruse the record with utmost circumspection. Learned counsel for the applicant contended that order of this court has not been complied with. Learned counsel for the respondent contended that order of this court will be complied with on 28th March 2025. लॉर्डशिप, Therefore, it is directed that on assurance of the learned counsel for the time is granted